Okay, so let's start with today's lecture, guys. Hmm, Sharing my entire screen. Let's so mm, this NumPy 5, NumPy 6. So we have come a long way, guys. So NumPy is about to end. Then इसके बाद we will start with Python. Okay. So today we will try to uh, finish NumPy. Basically NumPy के बहुत like एक दो ही फंक्शन बाकी है. एक दो ही फंक्शन बाकी है. Yes, and then it will get ended today. We will practice NumPy. Meanwhile, so आज की सारी NumPy is very crucial, so that's why we are giving a half lecture to practice it and do it. Okay. So सबसे पहले hmm, so how do you want me to practice like revise this? Either should I complete first and then revise entire Python, or should I just revise it and then complete it? So complete first and then revise. CR डाल दो यार revise and then complete. I think the first is that makes sense. Like what do you thoughts? What are your thoughts? Complete and then revise or whatever. You can type in the comments. So mm, you can type. अरे भाई open नहीं new notebook करना. Complete first and then revise. Okay, so let's complete first, guys. NumPy, I think it's seven class. Great. So cool. So I think we took 7 days to complete NumPy entirely. So Python would take more days, actually 9 days maybe. दो और दिन पकड़ लो उससे. So let's start with mathematical operations on array. So पूरे NumPy में we mostly look at मतलब NumPy is based on array. So we create array and then we do the operation on it, right? So we have seen in a very first lecture some mathematical operations. Yesterday we did saw some mathematical operations, like statistical operations, like these. Okay, so we will these to find minimum, maximum, summation, or mean or median, standard deviation, variance, and more, and quite a few things. So today we will try to understand how mathematical operation can be run on array. Okay, so let's take an array. Let's take an array and we will say numpy dot array. Okay, array कैसे create करते हैं everybody must know. एंड उसके पहले हम करेंगे import numpy as np. ठीक है, import numpy as np. देखिए, so when I was writing this was not detecting. Now you can see it is detecting np as numpy and ये सारा numpy के बारे में इन्होंने लिखा. Okay, so since let's create one array, so this is my array. Okay, this is my array. So today, since new joining, so today we are going to see how mathematical operations can be done on a NumPy array. Okay, so we have just created a NumPy array.
and if I ask this array, it looks like this. Okay, it looks like this. तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या रहेगा? एडिशन. तो numpy array में एडिशन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले if you simply say array plus 10, okay, if you simply say array plus 10, what it will give? It will add 10 in each and every element. इसके हर एक एलिमेंट के अंदर ये 10 ऐड कर देगा. ठीक है, 10 ऐड कर देगा. लाइक बट जब हम लिस्ट देख रहे थे, लेट मी जस्ट टेक अ लिस्ट, लेट्स से 2, 3, 5, 6. ठीक है, एक लिस्ट दे रहे थे. अगर मैं इसके अंदर 10 ऐड कर दूं, if I add 10, I have to do like this, by the way. If I add 10, what will happen? It looks like this. ये 10 as it will get append. ठीक है, it will get append. So addition in list is different than array addition. ठीक है, array addition. Array में अगर आप addition करते हो तो क्या होगा? It will add 10 in each and every element. Okay, it will add 10 in each and every element. Okay, each and every element. So this does happen same to the two-dimensional or three-dimensional array. So let me just take a two-dimensional array. Okay, I will say np dot array, and उसके अंदर I will create two-dimensional array like this 2, 3, 7, 9. ठीक है, 7, 9. And if I ask this array, so it's a two-dimensional array, right? It's a two-dimensional array. So simply if I add again 10 in this array, so what will happen? It will go and add each and in every item. In every item, it will add 10. Okay, 10 or 11, whatever you specify. Okay, whatever you specify. So this is how the addition of the array can be done. Okay, addition of the array can be done. This is the simplest way. ठीक है, ये simplest method है addition का. Then there is one more thing that we must understand. So there can be addition done in two arrays. Okay, so let's take one array. One array equals to numpy dot array, and inside this let's add 2, 3, 4, 5. Okay, and let's have one more array, that is array 2 is equals to numpy dot array, and उसके अंदर let's add 9, 9, 7, 6 or 5, whatever. Okay, let's say we have these two arrays right now, and we want to do the addition of these two arrays. So how will you do it? You will first take array 1, you will say plus, and then you copy this second one, and you say array 1 plus array 2. So what will happen now? If you see, the first element will get added to the second element, so its addition is 10. This will get added to this, its addition is 12, and so on. Okay, and so on. So this is a simplest method to add an array in each one. Okay, so first we saw how to create an array first, then we added a 10 in a direct array. Then going ahead, we added a 11 in two-dimensional array, and second we have added one array inside the another array, and it creates the third array, by the way. Okay, it creates the third array. So it will be similar for subtraction also. Okay, it will be exactly almost similar to subtraction. Okay, so if I take this array and if I do the -1, for example, okay, just for subtraction, what I've done, I've taken an array, and then this is an array entire, and when I say subtraction, it will -1 from each and every item. Okay, it will do the -1 from each and every item, and similarly for this too. और यहाँ पर if I just replace with -11, what will happen?
everything will go into minus, right? 11 minus 2 minus 9, 11 minus 3, like minus 3 minus 11 will be minus 8, 7 minus 11 will be minus 4, and so on. Okay, and so on. So this is pretty easy to understand, right? One dimension भी उसी तरीके से two dimension, and it will be the similar for subtraction as well. So if I minus this one from array 1 to array 2, and if I run this, I will get addition of each item. So 2 minus 8 will be minus 6. Okay, 3 minus 9 will be minus 6, and so on. Okay, and so on. You're getting this addition and subtraction. Is it clear or is it not clear? Is it clear? If this is clear, write clear in the comments. This is clear, write clear in the comments, guys. कैसे किया हमने? बस like very simple operation. Addition था, we added some number. It got added into each and every item, and it will do the same for two-dimensional also, three dimensions also, and we can add and subtract the same items from like same length of arrays from each and every item. Okay. So clear, clear, clear. बहुत बढ़िया. Going ahead. Okay. Now we will see. Now we will see multiplication. Okay. Now we will see multiplication. So how multiplication works? Okay. So again, I won't say it is uh, other than addition or subtraction. Okay. So if I say multiplication of 5 to the array 1, if I run this, I will get the each 5 will get multiplied to each and every item. Okay, each 5 will get multiplied to an each and every item. So is it same for two-dimensional array as well? Is it same for two-dimensional array as well? The question stands. If I run this, so let's multiply with 5 again. Okay, for easy calculation, and we can say it does the same for two-dimensional or three-dimensional array as well. Okay, it does the same for two-dimensional and three-dimensional array as well. Yeah, is it same for multiplication of two-dimensional array also? कहाँ पर है ये? यहाँ पर है. So let's try and explore. So I've taken array 1, array 2, and I am trying to multiply these array with each other. So let's see. Okay, it is doing the same. 8 into 2, 16. 3 into 9, 27, and so on. Okay, entirely simple, like very simple. कि addition भी same work कर रहा है, multiplication भी same work कर रहा है, and subtraction भी same work कर रहा है. Probably division will also work the same. Works the same. Probably division will also works the same. So let me just give you mm, one example or one question. Okay, one question. So I have taken this two-dimensional array and I am saying print. Okay, array minus 2. Okay, array minus 2. इसको मैं और एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, and I am saying plus array array uh, into 3. Okay, into 3. So what do you think? What result we must get? Okay, what do you think? What result we must get? So this is your question. This is your question, right? तो हमने क्या किया? You have टाइमर कहाँ पर है हमारा? शायद वो अदर मैप में है. काउंट डाउन टाइमर. अरे that was from Google ना. Okay, so you have 2 minutes, guys. You have
2 minutes. Solve this one. क्या किया है हमने? तो we have -2 from this array. इसको उसी array को multiply करा है 3 से, and then we are adding it. So how will it look? How will it look? Let's run our brain. So the timer goes on. We have 1 minute. Anyone trying? Fairly and entirely simple operation. Okay, fairly and entirely simple operations. So about, okay, someone tried this one. He says 610 and 2634. So we are expecting this output. तो अगर हम माइनस करते हैं इसके अंदर से दो, so we must get something like so 0 1 5. Let's write here 0 1 5 and 7. Okay, and then we also get here पर we should get 6 9 27 no, 21 27. Okay, and then we add it. So first we get 6, second we get 10, third we get 26, and 34. Okay, so this must be right. Okay, yeah, right answer. So let's try and run. So wow, great. So good job there. Anyone else know? So good job here. So this is a right answer. Okay, so it means you are getting what is happening here, right? It means you are getting what is happening here. So let's try and discover the same for division. So let's increase the speed for division. सबसे पहले यही लेते हैं. Let's divide this. Divide के लिए ये this operator we will be using. What operator? Division operator. If I do divide by this 2, I should get floats. Okay, I should get floats. So 2 divided by 2 is 1, 3 divided by 2 is 1.5, and so on. Okay. Mm, does it work for the two-dimensional array as well? So let's try and explore. Okay, let's try and explore. I'm dividing by 2 once again. Okay, dividing by 2 once again. So yes, it does the same for two-dimensional array as well. Okay, does it do the same for uh, two-dimensional arrays? Not two-dimensional. Does it do the same in between two arrays? We have array 1, array 2. उनके बीच में क्या ये डिवीजन संभव है? So yes, it is possible to divide by 8.2 and so on. ठीक है? So on. So it is possible that you can divide two arrays. Okay, it is divide. It is possible. So entirely addition, subtraction, multiplication, and division works the same. Works the same. So here comes the next. So we also have floor division. Okay, floor division. So does it work? कैसे करता है फ्लोर डिवीजन? फ्लोर डिवीजन के लिए you need to use double or operator. ठीक है, double or operator. So if I run this, I should get, okay, floor division also works the same.
any question why there is a space in output? Space in output. Let me अच्छा ये तो इस कंपाइलर का इश्यू है तो ये क्या करता है so whichever the longest so this is longest right this is longest so इसका length पकड़ लो कुछ 7 है so it will also try to get 7 here it will also try to get 7 here it will also try to get 7 here okay like this so see it is 4.5 it is also trying to get 4.0 it is like 2.5000 1.000 and that doesn't make sense to show you like itna zero that's why it is there is a issue not really a issue but अगर कोई दूसरा आईडी अभी हम कोलैब यूज करते तो दिस इज अ वेब बेस्ट गूगल को मेल कर सकते हैं कि भाई इसको सॉल्व करो जीरो है तो निकालो going ahead so floor division also works the same so floor division हो गया let's try and do the floor division on two-dimensional array it will work the same so let's see whether two arrays can be done using floor division तो यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा and it will work the same ठीक है it will work the same similarly there is one more function that is called as remainder okay remainder हमने देखा है where do we use remainder to find odd and even values right odd and even value so here also we can use right तो उसको कैसे इस ampersand से करा जाता है so if I run this I should get this as a remainder so remainders are always 0 and 1 ठीक है 2 divided by 2 will be 0 remainder will be 0 2 divided by 3 so 2 under 2 remainder will be 1 and so on ठीक है and so on so it will be always zeros and 1 okay let's try and have a same understanding on two-dimensional array run this again zeros and twos and it is working तो तो यहाँ पर if I do the divide by 2 it will be like that zeros and 1 by the way ठीक है अगर आप डिफरेंट नंबर से डिवाइड करोगे तो डिफरेंट रिमाइंडर्स आएंगे जैसे 2 divided by 8 will be the remainder will be 2 because 0.25 रहता है right तो 0 से चले गया उसके आगे का नंबर रहेगा 2 that's why 2 is the remainder okay so you must understand how remainder works and all those things so there is also another way of doing this अगर मैं यही ले लेता हूँ ठीक है another way like this np dot there is a inbuilt function called remainder ठीक है this is an inbuilt function और उसके बाद उसके अंदर ये अरे टू दे दो अरे वन दे दो सो इट विल गिव द आंसर ठीक है तो विल से ये अलग है बिकॉज यहाँ पर हम अरे वन को टू से रिमाइंडर फाइंड करें यहाँ पर मैं टू से वन को रिमाइंड फाइंड करो if I run this 1 into 2 the output will be same okay the output will be same then I guess the next function is square तो रिमाइंडर हो गया फ्लोर डिवीजन हो गया एंड डिवीजन हो गया इज देयर एनी डाउट द पुट एनी डाउट यस नो एनी स्लाइटेस्ट डाउट नो एनीवन एल्स एक्सप्लेन द रिमाइंडर ठीक है तो रिमाइंडर क्या होता है रिमाइंडर meaning uh, 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 calculation elementary calculus okay. So when you try to learn like very typically so this is the formula okay this is the formula क्या हो रहा है there is a division there is a divisor and there is a quotient and there is a remainder ठीक है there is a question and there is a remainder so for example अभी हमारे पास annotator है नहीं तो मैं यहीं पर बता देता हूँ ठीक है
रिमाइंडर क्या होता है? सो यू विल डिवाइड लेट्स से 9 बाय 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 9/2। सो दिस इज अ, यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, दिस इज अ डिविडेंड, दिस इज अ डिवाइजर, ठीक है। क्या है? अरे कहाँ पे गया वो? इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। This is a dividend, this is divisor. Okay. So when I do this, what I will get? 2 8 जा, नहीं 2 8 जा होगा, 2 4 जा 8। Okay, 2 4 जा 8, राइट। तो उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद क्या बचेगा? 1 बचेगा, राइट। 1 बचेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज, ये वाला फ्लोर डिवीजन में जो बच रहा है ना 1, ये रहेगा आपका, इसको कहेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन। एंड द रिमेनिंग इज रिमाइंडर। यहाँ पर एक बच रहा है, राइट। 2 डिवाइड, अगर 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, राइट। 8 के बाद में क्या बच रहा है? एक बच रहा है, 8, राइट। और एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं 11 डिवाइड बाय 2 बोल दूं तो यहाँ पर क्या होगा? 10, 10 नहीं 5, राइट, 5। और रिमाइंडर में क्या रहेगा? 1। अगर मैं 8 को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 8 4 जा हो गया, रिमाइंडर क्या रहेगा? 0, रिमाइंडर 0 रहेगा, राइट। तो दीज आर रिमाइंडर्स, ये रिमाइंडर आपका, ये रिमाइंडर आपका, ये रिमाइंडर। सो इन दिस लॉजिक अगर मैं 2 से करता हूँ तो ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल फॉर 3। तो अगर मैं 3 से करता हूँ 10 को, तो 3 3 जा 9, राइट, 3 3 जा 9। तो रिमाइंडर क्या रहा? 1, राइट। तो दिस इज अ रिमाइंडर, जो बच रहा है ना, 3 3 जा 9, what is remaining is 1, so this is called as a remainder. So now when we do this, अभी जो array है, this is a array. So when I say array ampersand 2, so it will typically give me only remainder. Which remainder? These 1 1 0 1. So 2 divide by 2, so 2 1 जा 2, क्या बचा बीच में? 0। 2 1 जा 2, क्या बचा? 1, so this is 1। 2 2 जा 4, क्या बचा? नथिंग, 0, and so on, ठीक है। So I hope like this is how remainder is gets calculated. उसी तरह फ्लोर डिवीजन कैसे कैलकुलेट होगा? टू डिवाइड बाई टू, ओके, 2 डिवाइड, 2 1 जा 1, 1 आ जाएगा। दिस वैल्यूज आर फ्लोर डिवीजन, फ्लोर 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 डिवीजन, ओके। दीज वैल्यूज आर फोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। अगर मैं यहाँ पे कह दूं 2 2 1 जा 2, तो 1 आ जाएगा। रिमाइंडर में क्या था? 1 था, तो 1 नीचे चल गया। 2 2 जा 4, तो 2 आ गया। रिमाइंडर में क्या था? तो 0, राइट। इस तरीके से फ्लोर डिवीजन कैलकुलेट करा जाता है, इसी तरीके से रिमाइंडर कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। सो यू should have a knowledge of what is floor division, you should have a knowledge of what is remainder, and but you don't really worry how this works, okay. Like this numpy, ये it will calculate it for you, ठीक है। ये अपने आप आपके लिए कैलकुलेट कर देगा। Okay, fine, let's go ahead. So I hope this is clear now. Okay, got it already, बढ़िया। अच्छा, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट इट इज फाइन। तो स्क्वायर हम अभी क्विकली स्क्वायर फाइंड करेंगे। सो आई एम सेइंग array equals to numpy dot array, एंड स्क्वायर कैसे फाइंड करना है? अरे यार, इसको क्यों बना रहा हूँ मैं? तो वी ऑलरेडी हैव दिस, सो लेट्स फाइंड स्क्वायर गाइस। स्क्वायर में क्या करना है आपको? यू जस्ट हैव टू यूज डबल एस्टेरिस्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा? हर एक चीज का स्क्वायर निकाल के दे देगा आपको। So 2 का स्क्वायर 4 and 9 and so on, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4। So there is one more way you can also do this like this। NP के अंदर एक स्क्वायर नाम से इनबिल्ट फंक्शन है, दिस स्क्वायर रूट भी है, if you check, फिर से जाते हैं, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, ऐसे काफी चीज है।
So there is a square function और इसके अंदर आपको सिर्फ ये array पास करना है, you will get the same square. Okay. One more function is there, np dot I think power आएगा, पावर भी आएगा, एक पाव भी है। तो अगर मैं कर दूं array और उसका स्क्वायर दे दो, इट विल गिव मी स्क्वायर। अगर मुझे क्यूब दे दो, इट विल गिव मी क्यूब। और अगर रेस्ट टू 4 दे दो, इट विल गिव मी एनी वैल्यू। ठीक है, तो आप टू द पावर कह रहे हो, अरे टू द पावर 4। ठीक है, अरे टू द पावर 4। और एक इनबिल्ट फंक्शन भी है पाइथन के अंदर, तो उसमें हम कह दे अगर पाव और एरे को 2 से दे दो, तो ये इट विल ऑल्सो गिव यू। तो numpy डॉट पावर भी है, पाव नाम से ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन भी है, इट विल ऑल्सो गिव यू द सेम थिंग्स। ठीक है, एरे टू द पावर, एरे टू द पावर 4, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन डू इट। कितना तरीका है, फोर वेज आते हैं। डायरेक्टली एस्टेक 2 कर दो, या फिर स्क्वायर कर लो, np डॉट स्क्वायर, np डॉट पावर। यार पावर ये नमपाई का नहीं है, पाइथन का फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से तो है अभी। और ये 2 डायमेंशन पे भी वर्क करता है, करना तो चाहिए। यस, इट डज वर्क ऑन 2 डायमेंशन ऑल्सो, और ऐसे भी चलेगा। ठीक है, np डॉट स्क्वायर, स्क्वायर और यहाँ पर आर ए डाल दो और 2 3 करते हैं। अच्छा, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी स्क्वायर। तो इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, so I hope this one is also clear. This one is also clear. Okay, quickly, guys. If this one is also clear, let's type yes, 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 yes. Okay, clear, clear. Yes, got it. Something others. Okay, yes, बढ़िया. One, two more. So, so this is it actually in terms of the calculation, not really calculation, division floor yoga. Then there is one more function that is called as matrix dot product. Okay, matrix dot product. डॉट मीनिंग मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, डॉट क्या होता है, डॉट का मीनिंग ही मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन ये हमें 10th 12 में किसी ने तो कभी तो पढ़ाया था। ठीक है, so dot meaning multiplication होता है। So what happens is, like for matrix dot product, so the number of first matrix should be equal to the number of rows of second matrix. Okay. इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आई हैव टेकन एन अरे इक्वल्स टू 1, उसके अंदर मैं डालता हूँ np डॉट अरे, और जस्ट सेइंग कि इसके अंदर एक 2 डायमेंशनल अरे ले लिया मैंने। ठीक है, 2 डायमेंशनल अरे ले लिया एंड 5 ऐसे कुछ ले लिया। दिस इज माय फर्स्ट अरे, एंड मैं एक अरे 2 भी ले रहा हूँ। ठीक है, अरे 2 भी ले रहा हूँ, np डॉट अरे, np डॉट अरे, उसके अंदर 4 6 एंड और एक है 3 4। तो नाउ आई हैव दिस 2 अरे। इसको मैं अगर रन कर दूं और यहीं पे कहीं पे कर दूं कि अरे 1 दे दो, अरे 2 दे दो, इट विल गिव मी लाइक दिस। ये अरे 1 है, अरे 2 है। ठीक है, so now we can create 2 dimensional array like this. So you must understand this also कि ये कैसे करा जाता है। ठीक है, so here if I say, here if I say np dot, np dot, so what it will give, it will give me डॉट में क्या करना है, अरे 1 पास करना है, कॉमा अरे 2 पास करना है। अरे 2 है हमारे पास है, तो मैंने क्या कह दिया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे दो। तो व्हाट इट विल गिव, so it will give me, now how should I explain this one. Hmm, so it is like 3 into, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, it is like into 3 into 4। ठीक है, 3 into 4 plus 3 into 4 plus 4 into
3 4 into 3 ओके 3 into चलिए 5 है हमारा 3 into 4 5 4 into 3 इट वर्क्स लाइक दिस तो ये कितना रहेगा 15 ये रहेगा 12 15 प्लस 12 कितना रहेगा 15 प्लस 12 कितना रहेगा 15 प्लस 12 रहेगा मेरा 27 ये 27 आ गया क्या करेगा ये इट विल फर्स्ट टेक दिस रो एंड मल्टीप्लाई करेगा इस कॉलम को क्या रहेगा 3 into 5 प्लस 4 into 3 नेक्स्ट रहेगा 5 into 5 ठीक है अभी ये रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा फॉर एग्जांपल प्लस 5 into 5 into 5 5 into 5 into 5 5 into 3 into 3 so let's check this one ये क्या होगा 25 plus 25 plus 15 ठीक है so this is 40 okay this is 40 कैसे रहेगा ये इसको मल्टीप्लाई करेगा this row will get multiplied to this column okay this row will get multiplied to this column now second सेकेंड कॉलम की बारी ये रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा कैसे 3 into 6 प्लस 4 into 4 दिस रो विल मल्टीप्लाई दिस कॉलम तो 6 into 3 कितना रहेगा 18 और ये रहेगा 16 if I run this I should get 34 here and now here ये सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेगा सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेगा सेकेंड कॉलम से so that will look like this 5 into 6 okay plus 5 into 4 okay ये कैसे रहेगा this will be 30 okay? 5 into 6 is 30 5 into 4 is 20 so it will be 50 like this here you can see so dot product क्या रहेगा first row multiplies or first row cross यहाँ पर ऐसे करेंगे array 1 का first row ठीक है array 1 का first row will get multiplied with array 2 का first column okay first column first ये क्या है column ठीक है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम देन उसके बाद रहेगा आपका array 1 का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ठीक है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ठीक है इस तरीके से ये हो गया आपका फॉर दिस ब्लॉक कॉपी गया फॉर दिस फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के लिए ये रहेगा फॉर फर्स्ट कॉलम फॉर फर्स्ट कॉलम फॉर सेकेंड कॉलम कॉलम ये कैसे रहेगा तो कॉपी कर लेता हूँ इट विल बी लाइक सेकेंड रो इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा ठीक है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा गलत बोल दिया क्या सेकेंड नहीं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा लास्ट में सेकेंड कॉलम सेकेंड so first row will multiply to second column and then last में रहेगा second row will multiply to second column this one okay so this is your kind of a formula for a dot product ठीक है this is kind of a formula so ये mathematically थोड़ा draining है understanding के लिए कि exactly ये कर क्या रहा है और ये क्यों कर रहा है
So there can be there sometimes there can be a problem that you need to solve using dot product. So mostly तो ये इतना भी ज़्यादा यूज नहीं होता है because I have never used it. बट डॉट प्रोडक्ट आपको सिंपल सिंपल मैट्रिसेस में करते आने चाहिए, जैसे ये 2 by 2 में, ठीक है, 2 by 2 में। वन मोर एग्जांपल, ये थोड़ा थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आया है? यस नो, यस नो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग। हेलो, यस नो, कंफ्यूज्ड? ओके, यस यस, भैया सही है। इतना भी मुश्किल नहीं है, बट इफ यू डू इट, इफ यू प्रैक्टिस दिस कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो समझ में आ जाएगा। लेट्स ट्राई एंड विथ वन मोर सम वर्ड, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल, ठीक है। मैं कह दिया एरे वन के अंदर आई एम अगेन, मैं 3 by 4 मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है। नहीं, 2 by 3 by 4 ही कर लेते हैं, 3 rows 2 columns, 3 by 2। ओके, से 5, 5, then 0, 1। ये मेरा ये मेरा एक मैट्रिक्स हो गया, 3 rows 2 columns, 2 by 3, 3 by 2, ओके, 3 by 2। और मैं अगर एक और एरे क्रिएट करता हूँ, np.array, और उसको मैं 2 by 3 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 by 3 मीनिंग टू टू रोज, ठीक है, 2 rows, 4, 6, 1, 3 columns, ठीक है, 9, 0, 9, 0, 2। Okay. So now if you simply say np dot array 1 comma array, so here you don't really have to manually do the calculation, ये कर लेगा। np dot इसलिए बनाया है ना, it will directly give you the output, but you must understand कि मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, then first row second column first row third column, then first second row first column second row third column second row third column, sorry, second column third column, then third row first column third row second column first third row third column, like this you'll get all these values। ओके, और उनका एडिशन भी होगा जैसे हमने यहाँ पर दिखा था। ओके, ये एडिशन, इसका कैलकुलेशन इसके लिए 27 के लिए, इसका कैलकुलेशन 40 के लिए, इसका कैलकुलेशन 4 के लिए, और इसका कैलकुलेशन 50 के लिए। ओके, लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो गाइस। और यू कैन, देयर कैन बी लाइक तीन तीन एक और एग्जांपल देता था। array 1 equals to np dot array। ये array लिखने में बहुत दिक्कत है गाइस, तो मैं ना ये एग्जैक्ट array उठा लेता हूँ array 1 के लिए। array 2 में चेंज करते हैं, ठीक है, array 2 में चेंज करते हैं np dot array, और इसको मैं 4 by 6 कॉमा 4 by 6 है, 4, 6 है, 5, 6, ठीक है। और सिंपली मैं इस यहाँ पर अगर बोल दूँ np डॉट, और ये array 1 के लिए array 2 के लिए, तो it will give me। But now let's say you added a array 3 also, देख लिए मैं यहाँ पर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में करता हूँ। तो अगर आपको array 3 भी इंट्रोड्यूस करना है, array 3, ठीक है, array 3 भी इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको करना होगा कुछ इस तरीके से। लेट मी जस्ट शो यू। लेट्स से आपने 0, 0 यूज करा है, एंड देन अगेन आपने 0, 0 यूज करा है, एंड दिस इज समवॉट रॉन्ग एरे, और इसको मैं और एक डायमेंशन में ऐड करता हूं। नाउ दिस इज राइट, ठीक है। सो यू विल से, आपको यू कैन नॉट डायरेक्टली से लाइक दिस, शायद नहीं होगा, थ्रो एरर, ठीक है, रॉन्ग डायमेंशन। सो यू कैन से लाइक दिस, रॉन्ग डायमेंशन बोला है तो शायद हो सकता है मैं इसको भी 2 by 2 कर देता हूँ। अरे ठीक, ओके, हो जाता है, ठीक है, हो जा रहा है। तो ये बैकएंड में बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है, और
इसके ऊपर एग्जांपल दे ये एंजस इन ये इस तरीके से वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल स्टेप वन रहेगा, ये रहेगा सिर्फ स्टेप वन ये रहेगा, ठीक है, स्टेप वन ये रहेगा एंड यहाँ पर स्टेप वन यहाँ पर स्टेप टू आएगा np डॉट ऐसे ये कॉमा बाकी है लाइक दिस। तो सबसे पहले इन दो का होगा एंड देन इसके बाद इन दो का होगा, ठीक है, इन दो का जीरो जीरो में तो जीरो ही आना चाहिए था। लाइक दिस इसका होता है, सबसे पहले ये दो होगा देन थर्ड विल गेट, इसका जो भी आउटपुट आएगा इट विल गो फॉर थर्ड। तो इसका जो भी इन दोनों का जो भी आउटपुट आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा लाइक दिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट NumPy guys. This is all about NumPy. So have you got this all clear? Not clear. All clear? Any doubt? Chota doubt? Bada doubt? People on the YouTube? Any doubt? Chota doubt? Bada doubt? All clear? 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 तो हमने ऑफिशियली NumPy क्लोज कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। तो उसके पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, NumPy के अंदर अभी तक 5 दिस 5 फाइल्स हैज बीन एडेड और आज 6 एक्चुअली, तो 7th फाइल भी मैं ऐड कर दूंगा सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल। NumPy को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो guys, ये लाइफ में आपका सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा NumPy एंड pandas, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आना ही आना है। ऐसा होगा ही नहीं कि इस पे क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं। So let's quickly revise. So we have some of a minutes, some of a minute. तो सबसे पहले हमने अच्छा आज का तो बात में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले गो टू दिस गिटहब रिपॉजिटरी, उसका लिंक आपको आइदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप में कहीं पे यहाँ पे मिल जाएगा, मैं डाल के रखता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, NumPy का ही फोल्डर का मैंने लिंक दिया है। तो when you open this you will land up here, ठीक है। और ये आज का डेट, आज की भी नोट्स में डाल दूंगा। यूट्यूब के लिए आपको यूट्यूब पे यहाँ पर प्लेलिस्ट है, इसमें भी कुछ वीडियोस पेंडिंग है, उसमें डाल दूंगा, या फिर यू कैन रेफर दिस वीडियो। इसको 2x पे लगा दो यहाँ से, NumPy 45 से 45 to 51 2x पे लगा दो एंड यू आर गुड टू गो। कैसे प्रैक्टिस करना है लेट्स टाइम। तो सबसे पहले नोट 1 ओपन कर लो और लिसन टू द लेक्चर एंड रन दिस ईच सेल। इसको आपके लोकल डिवाइस में, जैसे अगर VS कोड है तो उसके अंदर इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कैसे करना है, इसके ऊपर जाना है, यू जस्ट हैव टू से ये लिंक कॉपी करनी है और टर्मिनल में गिट क्लोन करना है। जैसे अभी VS कोड मेरे पास यहाँ पर है नहीं, आई विल शो यू इन द कमिंग लेक्चर, और शाम के लेक्चर में बता इन द इवनिंग लेक्चर ज्वाइन। तो कहाँ पर है हम, यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने देखा कि NumPy को कैसे इंपोर्ट करते हैं, देन वी सॉ कि हाउ डू वी हाउ डू वी एक्चुअली हाउ डू वी एक्चुअली कन्वर्ट द लिस्ट इनटू convert a list into array, ठीक है। so we use numpy dot array, ठीक है, numpy dot array के अंदर list 1 को पास कर दिया, this list 1 and we got this array, ठीक है। so we also seen कि homogeneous array क्या होता है। so array are basically homogeneous, that is why those are faster, list is comparatively slow, ठीक है। try to focus guys, मैं completely थोड़ा फास्ट स्पीड में ये कवर करने चाहता हूँ पूरे 7 फाइल्स, ओके, पूरे 7 फाइल्स। So now if you have string file, if you have a string object, your entire data will get converted into a string. If you don't have a string, if you have a imaginary number, तो आपके सारे numbers, सारे objects will get converted into an imaginary number. If you don't have even have an imaginary number but have a float, your everything will get changed into imaginary. If you don't have anything but integers, it will stay the same. Okay, it works like this.
स्ट्रिंग रहा तो सारे स्ट्रिंग होंगे, कॉम्प्लेक्स रहा तो सारे कॉम्प्लेक्स होंगे, अगर ये दो नहीं रहे, फ्लोट रहा तो सारे फ्लोट होंगे, अगर ये कुछ भी नहीं है तो स्ट्रिंग इंटीजर विल बी इंटीजर्स. ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस. नाउ why this happens? Because array is trying to make everything in a homogeneous data types so that it can speed up. Okay? So that it can speed up. Then we also seen b type function. B type में क्या you can specify, you can specifically specify कि कौन सा आपको डेटा टाइप चाहिए. So you have here इंटीजर है, फ्लोट्स है. अगर आपने कहा कि इंटीजर चाहिए तो सारे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर आपने कहा कॉम्प्लेक्स चाहिए तो सारे कॉम्प्लेक्स में, अगर आपने कहा फ्लोट में चाहिए तो सारे फ्लोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. If you say string, everything will get converted into string. If you say object, okay. If you say object, everything will stay the same. अगर string है तो string रह जाएगा, और imaginary पे imaginary, और integers float, and everything stays the same. Later we saw indexing. Indexing कैसे होता है? Array of -1, तो ये ऑब्जेक्ट दे देगा. Array of, अच्छा इसमें टाइप भी करा है तो इसलिए टाइप दे रहा है, कॉम्प्लेक्स टाइप, स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप, राइट. Going ahead, we saw one function. It's called as dim. D and dim. And dim क्या देगा? Dimensions. ठीक है. So हमने देखा कि this is single dimensional, this is double dimensional, this is triple dimensional, this is four dimensional, this is five dimensional. 1D, 2D, 3D, 4D, 5D. Okay. So now this is one dimensional array. So how do we get to know one dimensional? You will say array dot ending. It will give you a dimension one dimensional. So this is two dimensional array. How do we get to know? Array dot ending. It will give you two dimensional, three dimensional, four dimensional, and so on. This is a special example where there is no dimension. Dimension meaning there is no this square basis. So इस array को zero dimensional array कहेंगे. ठीक है. Now there is one more thing, that is how to convert the lower dimensional array into higher dimensional. So this can also be interview level question. Okay. So you can convert zero dimensional array to one dimensional to two dimensional, and so on. But you cannot really convert three dimensional array to one dimensional or two dimensional. Okay. So first we took this zero dimensional array. This is a zero dimensional. Okay. And you want to convert this array into three dimensional. What you will say? ND min equals to whatever number of array. So we said three dimensional. यहाँ पे तीन डायमेंशन आ गए. हमने चेक किया array dot dim and dim, तो उसने थ्री डायमेंशनल बता दिया. So that got converted. Similarly, three dimensional array cannot be converted into one dimension, right? And dim min हमने कर दिया one, तो वो होता ही नहीं है. It will stay the same. Okay, it will stay the same. Now we can convert two dimensional array into three dimensional. आपको सब सिर्फ कहना है and d min equals to 3. We also saw quickly slicing. Slicing क्या होता है कि लेट्स पे slicing कह लो, indexing कह लो. मैंने कहा array 0 तो मुझे 2 दे देगा, array -1 तो मुझे 5 दे देगा, right, like this. मैंने कहा array 1 तो मुझे 3 दे देना चाहिए, तो we got 3. And whenever, so for it works the same for two dimensional or three dimensional array as well. ठीक है. So three dimensional array में से, two dimensional array में से, if I want this 3, so I will say 0. तो जीरो से मुझे ये आ जाएगा, और उसके अंदर आई विल से इफ अगेन जीरो, यहाँ पर मैंने वन लिया है बिकॉज आई वांटेड दिस फोर, लाइक दिस. एंड अगर मुझे ये फाइव चाहिए फ्रॉम दिस एग्जांपल, so this is a zeroth element, this is first element, so I will say number, this number of one. वन क्या करेगा? मुझे ये देगा. उसके अंदर फिर से मैं वन करूंगा क्योंकि दिस इज zeroth element, इस first element, and I should get this 9. फर्स्ट 9 मिल रहा है, बाद 5 मिल रहा है, सो तो इसको प्रैक्टिस करो. तो वी ऑल्सो सॉ फॉर थ्री डायमेंशनल एरे. थ्री डायमेंशनल एरे के लिए ये तीन बॉक्सेस आएंगे. ठीक है, लाइक दिस. एंड आई थिंक दैट इज ऑल दैट वी हैव सीन दैट डे. ठीक है, so this is how we end up learning about the first NumPy first. So you just have to come here NumPy 2. यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? हमने देखा how to convert any array into a data frame. तो डेटा फ्रेम हम कमिंग लेक्चर्स में पांडास में बिल्कुल ही सीखेंगे, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पांडास को इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट पांडास एज पीडी, एंड यू हैव टू से df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसके अंदर ये एरे डाल दो. Just add this array. You'll get data frame like this.
लेकिन मैंने कहा कॉलम का नेम कॉलम 1 दे दो, ठीक है, कॉलम का नेम कॉलम 1 दे दो, तो कॉलम नेम आ गया। इफ यू हैड नॉट मेंशन दिस, तभी भी चल गया रहता था, यहाँ पर कॉलम नेम 0 आ गया रहता था, ठीक है, अपने आप 0। तो हम df.info भी कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत इन्फो दे देता है वो डेटा फ्रेम के बारे में। लेटर वी सॉ हाउ टू चेंज टू एरे, लिस्ट को एरे में कैसे चेंज करना है, इस तरीके से प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और उसी एरे को इस डेटा फ्रेम में कैसे चेंज करना है वो अभी देखते हैं। तो इट्स द सेम कि एरे यहाँ पर डाल दिया, एरे की वैल्यूज आ गई, दिस इज द एरे 2 34 55 11 एंड कॉलम नेम हमने डाल दिया वैल्यूज, तो कॉलम नेम आ गया। देन वी सॉ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज कॉल्ड एज रीशेप। रीशेप क्या करता है, आपका जो भी वन डायमेंशनल एरे है उसको अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। So now these are eventually 12 numbers, तो हम उसको रीशेप किस में कर सकते हैं, 1/12, मतलब 1 रो 12 कॉलम्स, 12/1 मतलब 12 रोज 1 कॉलम, ठीक है, या 3/4 मीनिंग 3 रोज 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, 4/3 मीनिंग 4 रोज 3 कॉलम्स, और 2/6 मतलब 2 रोज 6 columns, या 6/2 meaning 6 rows and 2 columns, okay। Then it depends, like ये सब का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो 12 ही आएगा, 6 into 2 12, 4 into 3 12, 12 into 1 12, like this, क्योंकि ये 12 नंबर्स है। अगर आपका एरे 4 है, इसका लेंथ 4 है, तो आप 2 into 2 कर सकते हो, 1 into 4 कर सकते हो, राइट, 2 into 2 4, 1 into 4 4। तो इस तरीके से ये डायमेंशन चेंज करते हैं। कैन वी डू इट फॉर 3 डायमेंशन ऑल्सो? यस, वी कैन चेंज इट टू 3 डायमेंशन। इसका भी मल्टीप्लीकेशन 12 होना चाहिए, 2 into 3 6, 6 into 2 12। तो ये इस तरीके से आ गया। ये कैसा है, आई वॉन्ट टू बिग लिस्ट, ये 2 बड़ी लिस्ट आ गई, these 2 बड़ी लिस्ट, उसके अंदर 3 रोज, ये 3 रो आ गए, 1 2 3 1 2 3, और उसके अंदर 2 कॉलम्स, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। सिमिलरली यहाँ पर भी वी कैन गो फॉर, मुझे 3 बड़ी लिस्ट चाहिए, 1 2 3, उसके अंदर 2 रोज चाहिए हर एक के अंदर, 1 2 1 2 1 2, हर एक के अंदर 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स, सो ऑन, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है जो मैच नहीं करता है। अभी हम 12 एलिमेंट्स के साथ खेल रहे थे, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन आप करोगे so it will be like 1 into 2 2, 2 into 3 6, 6 ही आएगा, 12 नहीं आएगा, so that's why it gave cannot reshape array size 12, ठीक है। Then we also saw converting an array to a list, so this is easier one, I'm just skipping this as of now। easier one है, but उसको बस to list ये फंक्शन यूज करना, it is good to go, ठीक है, it is good to go। देन दिस इज रैंडम नंबर जनरेशन, हमने शुरू किया था इस दिन। सबसे पहले हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट एम्प्टी अरे, सो यू जस्ट डोंट हैव टू मेंशन एनीथिंग इनटू अरे, आपको एम्प्टी अरे मिल जाएगा। जीरोस, तो np डॉट जीरोस एक स्पेशल फंक्शन है, वो आपको दे देगा हाउ मेनी जीरोस यू वांट, ठीक है। डेटा टाइप मेंशन कर दोगे तो डेटा टाइप भी आ जाएगा, उसके अंदर कुछ 2 डायमेंशनल मेंशन कर दोगे तो 2 डायमेंशनल भी आ जाएगा, एंड आई गेस 4 डायमेंशन भी आ जाना चाहिए, ठीक है। हमने शायद उसका एग्जांपल नहीं लिया। उसके बाद हमने वंस देखा, वंस भी वर्क्स द सेम, लेकिन वहां पर बस 1 1 आएगा। सो दिस इज कैन आल्सो क्रिएट 1 डायमेंशनल, यू कैन आल्सो मेंशन द डेटा टाइप, तो सारे इंटीजर आ गए। यू कैन आल्सो गो फॉर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशन, तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये डेटा फ्रेम क्रिएट करी है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। Then we saw a range function. A range function. It is exactly same to a range function in the list, from the list. तो वो क्या देता था? Number of function ये देता था. You are just specifying 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट दे दो, ये दे देगा. It will also do the same in the NumPy. np.arrange 1 से लेकर 20 नंबर दे दो, you got it. वहाँ पर स्टेप साइज भी वर्क करता है, तो यू जस्ट सेट स्टेप साइज इक्वल्स टू 2, तो हर एक सेकंड एलिमेंट आपको मिले, हर एक सेकंड नेगेटिव स्टेप साइज भी वर्क करती है। देन वी स्पेशली सॉ लिन स्पेस विच इज लीनियर स्पेस वैल्यूज, ठीक है।
इफ यू से लिन स्पेस 0 से स्टार्ट होनी चाहिए 20 तक, इसके अंदर 21 एलिमेंट चाहिए, तो यूल गेट हर एक वैल्यू के अंदर लीनियर स्पेस रहेगा, 1 माइनस 0 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 1 4 माइनस 1 1। इफ यू सेट 0 से लेके 23 तक तो 12 डिजिट्स चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पर देख लो हर एक के बीच में 2.09 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 2.09 2.09 2.09। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न एंड बाद में हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर ली थी यूजिंग दिस डिक्शनरी। ओके, ऑन द डे 4, आई थिंक डे 4 और डे 5 वाज वेरी लॉन्ग, जिसमें हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। तो हमने सारे ये रैंडम नंबर जनरेट करने के फंक्शन देखे। सबसे पहले रैंडम डॉट रैंडम, वो जनरेट करेगा 0 से 1 लेकर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट करने के लिए रीशेप यूज करना होता है। देन देयर इज दिस फंक्शन रैंडम डॉट रैंड, जो उसमें भी 0 से 1 लेकर देगा। रैंडम डॉट रैंड इंट, ये देगा आपको आगे देगा। सो रैंडम डॉट रैंडम विल गिव यू रैंडम नंबर, ठीक है, तो वो भी 0 to 0 रैंडम डॉट रैंड। तो हमने कहा 7 नंबर दे, तो इसने रैंडम 7 नंबर दे दिया। इसको अगर मैं फिर से चलाता तो ये शफल होगा, ठीक है। If I don't mention anything, it will give me one number. If I mention 10 numbers, it will give me 10 random number. If I say 4 list 5 columns में मुझे नंबर दे दो, तो यहाँ पर 4 रोज आ गए, ठीक है, 5 कॉलम्स आ गए, रैंडम नंबर, ठीक है। 5 5 क्या चाहिए मुझे, रोज चाहिए, 10 कॉलम्स चाहिए, दे दिया उसने। रैंडम डॉट रैंडम में मैंने कहा इस नेक्स्ट फंक्शन में इट वर्क्स द सेम, कि अगर मैंने 10 मेंशन कर दिया तो 10 नंबर आ जाएंगे, 7 मेंशन कर दिया तो 7 आ जाएंगे। But I cannot get this two-dimensional or three-dimensional array. So for that matter, I need to say reshape. So reshape अगर यूज करते हो तो मिल जाएगी। उसके बाद random dot rand f वो भी 0 to 1 ही देगा। It almost works the same. Then random dot rand interface is interesting and most widely used, जिसमें you need to mention कि मुझे 1 से लेकर 20 नंबर चाहिए, उसके अंदर 15 नंबर चाहिए। तो 1 से लेकर 20 नंबर ही है सारे और 15 ही नंबर। सिमिलरली मुझे 1 से लेकर 20 नंबर चाहिए, 15 चाहिए, सबका डेटा टाइप इंटीजर चाहिए, ठीक है, फिर एंड सो ऑन। ठीक है, रैंडम डॉट रैंड एफ क्या करेगा, इट विल गिव यू numbers around 0 comma 0 coordinates, so it can be negative, it can be positive. Then we saw sort function, ये क्या करेगा, it will sort the numbers from lower to higher, और अगर आप रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करते हैं, फ्रॉम लार्जर नंबर टू लोअर नंबर। मैट्रिक्स भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, सो दिस इज अ मैट्रिक्स। हमने इसको कॉलम वाइज भी सॉर्ट करें। कॉलम वाइज के लिए आपको कहना होता है एक्सेस इक्वल्स टू 1, रो के लिए आपको कहना होता है एक्सेस इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज हाउ आवर डे 4 एंडेड। डे 5 इज इंटरेस्टिंग, जिसमें हमने सीखा रिप्लेसिंग एनी आइटम इन एरे यूजिंग इंडेक्सिंग। ओके, इंडेक्सिंग क्या होता है, हमने कहा कि सो दिस इज योर नंपाई एरे, उसके अंदर यू आर सेइंग एरे 1, ये 18 को रिप्लेस कर दो 1000 से, 1000 से, इट गॉट रिप्लेस। एंड उसके बाद हमने देखा यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट क्या करेगा, ये न्यू एलिमेंट ऐड करेगा। कैसे ऐड करेगा, यू आर जस्ट सेइंग np डॉट इंसर्ट, इस एरे के अंदर लोकेशन 2 पे 4000 ऐड कर दो। लोकेशन 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसमें 4000 ऐड हो गया एंड द रेस्ट इज एग्जैक्टली सेम। ओके, रेस्ट इज एग्जैक्टली सेम। उसके बाद हमने अपेंड फंक्शन देखा। अपेंड में क्या होता है, यू डोंट हैव टू मेंशन द लोकेशन, यू जस्ट से np डॉट अपेंड, उस एरे को मेंशन कर दो और क्या ऐड करना है वो बता दो, 10 हमें ऐड करने थे। It will automatically get added into at the last location, ठीक है। You can also add like this, you can also add like। उसके बाद हमने रो वाइज देखा। रो के लिए आपको एक्सेस 0 करना होता है। कॉलम वाइज देखा। कॉलम के लिए आपको एक्सेस 1 करना होता है। एंड देन उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट देखा। तो इट वर्क्स द सेम लाइक अपेंड, बस यहाँ पर आप मल्टीपल एरेज आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल एरेज। उसके बाद हमने लूपिंग देखा कि लूप कैसे करते हैं। तो जैसे ये लिस्ट में करते हैं, इट इज एग्जैक्टली सेम हियर आल्सो, ठीक है, इट इज एग्जैक्टली सेम हियर आल्सो। तो हमने कहा फॉर आई इन एरे 1, तो एरे में ये आई गया, हर एक एलिमेंट को चेक किया एंड वी गॉट द वैल्यू समवन, ठीक है।
उसके अंदर कुछ फंक्शंस है, जैसे इनुमरेट भी हमने देखा, एंड एंड ईटर देखा। एंड ईटर क्या करता है, इट वर्क्स ऑन द 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल अरे एज वेल। सो दिस इज 2 डायमेंशनल अरे, उसने 2 डायमेंशनल अरे को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। और एंड इनुमरेट क्या करता है, हर एक की इंडेक्स एंड वैल्यूज भी देता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर डे 5 एंडेड। ओके, तो इस तरीके से लाइक 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में भी रिवीजन हो जाती है, बट इफ यू नो द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इफ यू नो द कॉन्टेक्स्ट। बट फॉर एग्जाम्पल हर एक शीट के लिए आपको 10-10 मिनट भी लग गए तो आप बहुत अच्छे से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट दीज शीट्स, ठीक है। हम डे 6 पे हमने देखा सील। सील क्या करेगा, सीलिंग प्राइस देगा। फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर प्राइस देगा। फ्लोर मतलब बॉटम प्राइस, सील मतलब टॉप प्राइस। तो अगर मैं कहता हूँ a = 2.75, तो एंटी डॉट सील क्या देगा मुझे, 3 देगा। वेरएज फ्लोर ने क्या दिया रहता था, 2 दिया रहता था, ठीक है। तो गो थ्रू कर लेना। अराउंड क्या करेगा, मैसेज, आई हैव अ मीटिंग गाइस। ओके, आई हैव अ मीटिंग, ठीक है। सो गो थ्रू ऑल दिस, आई थिंक दीज आर वेरी इजियर वन। आर्गमैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर का इंडेक्स देगा। और ये सारे फंक्शन स्टैटिस्टिक्स में काम आते हैं अगर इफ यू आर वेरी हार्ड कोर डेटा साइंटिस्ट वर्क्स इन मशीन लर्निंग एंड ऑल। सो यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स 100% काम में आता है, ठीक है। बट दीज आर वेरी इजी। मिनिमम नंबर दो, मिनिमम नंबर दे दिया। मैक्सिमम नंबर दो, मैक्सिमम नंबर दे दिया। समेशन दे दिया, उसका मीन दे दिया, उसका मीडियन दे दिया, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, देन इट ऑल्सो गिव यू वेरियंस और मोड भी दे दिया, लाइक दिस। सो दीज आर वेरी इजी। और 7th डे पे हमने ऑलरेडी ये चीज़ें देखी है। मैथमेटिक्स में हमने एडिशन देख लिया, कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर एंड स्क्वायर। सब स्क्वायर रूट भी कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है, ठीक है। स्क्वायर रूट भी अगर मैं यहाँ पर एन पी डॉट स्क्वायर रूट डाल दूँ, उसके अंदर एरे डाल दूँ, इट वर्क्स द सेम। ये सारे के सबके स्क्वायर रूट दे देगा, ठीक? सबके स्क्वायर रूट दे देगा। जस्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर। कुछ इस तरीके से भी ये स्क्वायर रूट वर्क करता है। पावर भी देखा हमने कि कैसे पावर वर्क करता है। और ये थोड़ा सा interesting, matrix dot product. So this also we saw. Okay, this also. So officially NumPy is over, guys. I will upload these notes on the GitHub. आपके पास वीडियोस तो है ही, ठीक है, आपके पास वीडियोस तो है ही। एंड लेट्स गो एंड get your opinion. So if you have any questions, राउंड नंबर में आपको राउंड क्या करता है, राउंड विल गिव यू round will give you, let's say you have someone have 89% and like this. So if you say 2, if you say 2, so the output should look like this, 89.99, ठीक है, 89.99, मीनिंग इसके बाद के जितने भी नंबर से वो उसने राउंड ऑफ कर दिए, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया और 89 आपको मिला। So I hope this is also clear. Is there any question, guys? Is there any question? So you have uh, half minute. You have 32 seconds. If you have any questions, let me know in the comments. Slightest of the question on even YouTube viewers, slightest of the question. Any questions? Questions, guys? Tomorrow we will start by pandas. Okay, so be prepared. NumPy khatam kar lo. And if you don't have any question, type win in the comments. Cool, win. We are starting a day with a win. सही है, बढ़िया, बहुत सही, ठीक है। So let's get going.
और यूट्यूब पे किसी को और भी क्वेश्चन है, यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप ऑन दिस। यहाँ पर पोस्ट किया जाओ, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप और गो थ्रू दीज नोट्स। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मैसेज डाल सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, सब्सक्राइब लो, लाइक कर दो वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं। And if you don't have any question, let's close today's lecture, guys. See you tomorrow 8 a.m. And those in the evening we have launched the second batch also. जहाँ से एकदम स्क्रैच से हम सिखाएंगे complete Python to data science, machine learning, AI, everything. So come there and join the batch. Okay, right. Bye bye. See you tomorrow. राहुल रॉक्स, हेलो सर, कोई क्वेश्चन है तो मेरे को व्हाट्सएप ही कर दो और राहुल, ठीक है। ज्वाइन मैंने बता दिया कि कैसे लिंक ज्वाइन करना। आई विल अप्रूव द रिक्वेस्ट एंड यू कैन मैसेज। आई हैव अ मीटिंग सो आई हैव टू गो बैक राहुल। सी यू टुमारो गाइस, or the evening if you join.